हेलो गाइस, सो माई सेल्फ हितेश सिंह राव और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बहुत ही मज़ेदार शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है जस्ट एक ग्लिम्स है आज के ओकेजन का, आज के फेस्टिवल का जो आज हुआ IIT रुड़की के अंदर। IIT रुड़की हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड 175 ईयर्स और आज बेसिकली क्लोजिंग सेरेमनी थी 175 ईयर्स की। 175 ईयर्स पूरे हो चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू 176 ईयर्स ऑफ IIT रुड़की। तो इस लीगेसी का जो 175 का एंड था उसका आज सेलिब्रेशन था, बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन था, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो उसको छोटे से एक 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता। तो डेफिनेटली हम कल या फिर डे आफ्टर टुमारो एक डिटेल्ड व्लॉग इसके ऊपर जारी कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से व्लॉग बनाया है, हर चीज़ को कवर किया गया है। कवि सम्मेलन हुआ था, ड्रोन शो हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें थी सुबह सुबह जो हुई। ठीक है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आए थे एज ए चीफ गेस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ओकेजन था, फंक्शन था आज यहाँ पर। परंतु इस वीडियो के अंदर आपको एक छोटी सी ग्लिम्स मिल रही होगी आज के ड्रोन शो की, जो अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है और आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। बहुत ही अमेजिंग वीडियो, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है। तो आई होप यू ऑल विल बी इंजॉइंग इट अ लॉट। और अगर यार थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देख तो लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के अंदर। एंजॉय कीजिए अभी ड्रोन शो को। बाय बाय। द फर्स्ट ड्रोन गाइज, और ड्रोन शो शुरू हो रहा है। अभी आपको आसमान के अंदर बहुत सारे ड्रोन्स दिखेंगे, ऑलमोस्ट 250 प्लस ड्रोन्स हैं। IIT रुड़की इन द स्काई, द स्टोरी ऑफ होल IIT रुड़की, द जर्नी अभी आपको आसमान के अंदर दिखेगी इस तरह से, बहुत तगड़े तरीके से। सो स्टे ट्यून और मुझे पूरी उम्मीद है कि यू आर गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट। Roorkee, and this is my skyward story. The oldest engineering institute of the country, your IIT Roorkee, owes its origination to the holy waters of River Ganga. After the Agra famine of 1837 affected more than 8 lakh people, a pressing need was felt to build an irrigation system in the Wag region. The then Lieutenant Governor of Northwest promised of main canal and 4,000 miles of distribution channel, irrigating 9,000 square kilometers. In Roorkee, sitting with full grace and alertness, paws stretched out and head held high, confident in his majesty and power, but showing neither fear nor ferocity. These lines reflect the ethos and values nurtured by the Institute through the centuries. The Convocation Hall of IIT Roorkee is the final step in the Institute for the future engineers of the world. The alumni from the Institute include the famous Sarvan Baran, A.N. Khosla, Alan Cunningham, Neelmani Mitra, S.V. Sethi, Kavar Singh and the likes, and boasts of one of the biggest alumni base in the country. Time and again, the Institute has come forward in the service to the nation. In 1942, during the Second World War, the Convocation Hall was converted into a hangar to service fighter planes. With the dawn of independence on 15th August 1947, our institute ushered into a new era of hope, enabled with technology. The promising College of Civil Engineering was rechristened as University of Roorkee in 1949. When the country demanded service of its technical experts, your institute and other basic infrastructure for our new nation. Our alumni were not just enabling the country in technology, but we were contributing wholeheartedly in policy making and nation building.
Year 2001 was another major year in the history of your institute when it was renamed from the University of Roorkee to Indian Institute of Technology Roorkee. Shravam Vinana Kimapi Sadhyam, which means nothing can be achieved without hard work. The name had changed, but the ethos and values inculcated in each and every individual associated with the institute remained intact and etched in the words. Today, on the eve of 175th year of the foundation, the Institute reinvigorates and rekindles the same spirit of technical excellence and service of the nation. With renewed and refreshed zeal, the Institute once again commits itself to development of Indian youth and prepare them to take on the world on the counts of hard work, merit and unflinching objective to make a better world. The Institute is once again willing, able and ready to contribute in the making of New India. We are right here, ready to lead the future.